Okay. So by conditional formatting, we mean we format based on certain criteria. And where you can find conditional formatting? Conditional, you can find it in the home tab. A conditional formatting. If you now drag it down, you see we'll take one by one. Number one, they're taking the highlight cell rule, and it has also got certain things. Then there is a top bottom rule. There is a date bird. There is a color scheme. There is an icon set. Everything will pick up one by one. Right. But to start with, hello, to start with, we are taking the highlight cell rule first. Right. So we select this. और हमने बताया anything that is below 50 should be debarred. So I go to the conditional formatting. I take the highlight. Here I choose less than. I choose less than. अब लेस देन पे मैं यहाँ पे खुद ये अपने आप ले लेता है. I take 50%. Right? I take 50%. Less than 15%. By default, it has taken a format style. Light red fill with dark whatever it is. आप अगर चाहते हो, you can come to the custom format. Right? And you can change the color. Suppose let me give it a blue fill and maybe font. I give it a red color. Okay. Okay. You see this? तो जो आपके 50 के नीचे there's just been highlighted. Now see, the funny thing is that this is pure dynamic. अगर मान के चलो बच्चे ने आके मुझे हल्ला किया कि मैम मेरा अपना अटेंडेंस नहीं था मुझे, मैं इस क्लास में आया था, वेरी गुड, आप इस क्लास में आए थे, वेरी गुड, जैसे ही 50% के ऊपर आया अपने आप उसका फॉर्मेटिंग चेंज हो. यू सी दिस? हेलो? Yes, sir. राइट. नाउ यू कम हियर अगेन. जैसे इस बच्चे का मैंने गलती से एक्स्ट्रा परसेंटेज दे दिया, आई मेक इट 0. ठीक है, जैसे ही ये 50% से नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी जो मैंने चूज करी थी. हाँ, somebody was asking something, please. हेलो, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे? Sir, can you repeat this? This? हाँ, I will. Why not? Why not? Why not? Okay. I will repeat, sir. Don't you worry. Alright. So I go to conditional formatting. देखो conditional formatting में अगर आपने कर दिया है, and if you want to remove the conditional formatting, you have to come to the conditional formatting again. Clear rules. I click it from the entire sheet. It's gone now. Now conditional formatting is formatting based on certain criteria. Right? A series can be formatted based on certain criteria. हमने यहाँ बताया कि ये बच्चों को अटेंडेंस का परसेंटेज है, जो 50% के नीचे जितने बच्चे हैं अब सबको फेल कर दो, मतलब सबको डिवाइड कर दो, highlight them. At least I can identify this number, this number, this number, this number, which is below 50%. Right? To do that, whatever I want to format. Suppose I select this. Yeah. मान के चलो ये पूरा का पूरा मैंने सेलेक्ट किया और मैंने बताया जो जो जीरो है उसको हाईलाइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द होल रेंज जो जीरो है उसको आप हाईलाइट करो. इट इज नॉट ओनली वन सीरीज, एवरीथिंग दैट आई हैव सिलेक्टेड. नाउ आई कम टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. राइट, आई कम टू द हाईलाइट शील्ड अगेन. तब हाईलाइट में देखो आपको पता चलेगा इक्वल टू. यहाँ क्योंकि मुझे इक्वल टू जो मुझे रिक्वायरमेंट होती है, नाउ आई से इक्वल टू जीरो. राइट, इक्वल टू जीरो, यू कीप दिस हाईलाइटिंग. आई क्लिक ओके. तो जो जो इक्वल टू जीरो है दैट हैज बीन हाईलाइटेड. अब यहाँ अगर मैं 1 डाल देता हूँ, आई कीप पुटिंग 1. सी हियर 1, it's gone. Now here I want anything below 50% to be highlighted again. So I can keep creating formatting, right? So I creating the second highlight cell. I am saying the less than, if it is less than 50%, I give another formatting style, not this formatting style. I choose it, I go to the custom format, fill whatever you choose like, font, you choose this color, right? You choose a strike through, very interesting, मुझे अच्छा लगता है, this. So right now in this worksheet, there are two conditional formattings, and you can keep adding those. Although once if you wish, you can make them green because those are positive.
right? So again you can select it, you come to the conditional formatting, again you come to equal to, you type 1, you say I will make all of them fill, I give a green background. See, once are green background. Now suppose somebody said, okay, then you make the zeros as red background, light red background, right? So what I can do, I've already made it pink, right? But they're asking, no, no, no. If you have made one green, make the zeros as red. Right now, anywhere you put zero, it will automatically take the zero formatting. And if it comes anything below zero, 50%, it will change its formatting, right? But what they are asking me, कि भाई ये pink color नहीं है, इसमें red color लाओ. Already condition formatting done. So already, if I want to change the criteria in already created formatting, I'll have to go to the conditional formatting, and here I'll go to the manage rules. I repeat, I'll have go to the conditional formatting and I'll keep on the manage rules. In the manage rules, I'll have to select the whole worksheet. दिख रहा है आपको तीनों का तीनों आपके सामने है. This is one conditional formatting, another conditional. Now they asked you कि change भाई इसका color change करिए. तो you double click है. ये खुल के आ गया. Right. This has come. Again I repeat. I close it. Already done. So I need not do anything. I got to conditional formatting. Manage rule. This particular worksheet, you can choose this worksheet, so all the conditional formatting will come. You can select this one. You click on the edit, this particular skin comes. Now here, I'm not going to change anything, only I need to change the color. So I click on the format, I go to the fill, I make a red, right? If it red color looks pretty bright to me, I can make it a bit, lighter, further lighter, right? Okay, 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 right. Now see, you got my point? हेलो. और अगर सबके सबको मुझे हटा देना है, Yes, sir. अगर सबके सबको मुझे हटा देना है, यू कम टू द आइदर यू कैन रिलीव इट फ्रॉम ए सिलेक्शन, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई सिलेक्टेड इट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड, आई कम टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, clear from selection of the cells. When I click clear from the selection, it will only remove it from the selections. जहां जहां आपने सिलेक्ट किया वहां से, और पूरा का पूरा वर्कशीट से if you want to remove it, you enter worksheet, now gone, it's nothing. Now you come to this manage rules, the worksheet, there is nothing, everything is now removed. Okay, fine. Okay, अब इसमें अगर मैं, अब तो ये this is something, this is happened. Okay, all right. Right. Now let us come to different variations of the, this is highlight cell rule. अब highlight में हम और क्या क्या कर सकते हैं? Highlight cell rule में we can do less than, we can do greater than, equal to. Also we can do something for the text, right? अब I have selected this. Not only numbers, it can also do for the text. I come to the conditional formatting, text that contains. Now if I write M, ठीक है? Okay. See, सारे M को इसने highlight कर दिया. Got my point? तो स्टार्टिंग लेटर से भी हो सकता है, या पूरा का पूरा. इफ आई वांट टू गिव टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इफ आई नाउ टाइप हियर एस, तो सैटरडे संडे दोनों का करेगा. और इफ आई गिव मे बी मंडे, MON, मंडे, देन अगेन आई गो, आई change the format and I change whatever format I want, it will change accordingly. So I can dates, occurrence of the dates also it can do, right? For that I have to select the date. I have to select the date. Once I select the date, you come to the highlight rule, a date occurring, right? Date occurring, and in date occurring,
They will ask for yesterday, today. If I say today, okay, nothing is happening because there is no today's date, right? Now, if I put today's date, suppose equal to today, if I put, right? See, it will be formatted. Again, you choose it, maybe you come to the conditional formatting, you come to the date occurring, like that this week you may be, last month you may be, everything it can. So these things you'll have to practice in the highlight tool. It can format dates based on certain conditions कि अभी से एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले. It can format numbers based on, as I said, alphabets. You can uh, format based on certain words, and okay. Another thing that it can do conditional formatting is, I remove all this. Watch it. There's so many. Okay. So let me first remove these things. Clear rules from the entire sheet. Now the next option that we are taking, top bottom rules. Right. अब टॉप बॉटम रूल्स अगर हम इस पे आते, अगर मुझे टॉप 5 अटेंडेंस निकाल ऑफ द क्लास, only top 5 attendance, we did it, right? I come to the conditional formatting, I come to the top button, top 10, instead of 10 I give 5, right? These are the top 5 attendance of the class. Same way, अगर top button पे हम, sorry, I come to the manage rule, right? I can find the top number 1 also. Instead of top 5 I make it 1. So this particular guy has got the, these guys have the highest attendance, 67%, 67%. Now if I add somebody else, he will become highest, बाकी सब घट जाएगा. See, 75%, 83% is the highest. Same, if I'm giving the topper, I can come to top bottom rule, right? Bottom 10% I can give, bottom 1. Okay, so that is the top bottom. Top, now here I can give the 10%. Instead of giving top 10, I can give percent. A percent, I hope you understand the concept. 10% of the whole group will be how much? Let's see. ठीक है, तो हम अगर अभी करते हैं क्लियर रूल एंटायर शेप. नाउ आई सिलेक्ट एवरीथिंग, आई कम टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइदर टॉप 10% को फॉर्मेट करो, ओनली 3 आर फॉर्मेटेड आउट ऑफ दिस टॉप 10%. ऑलराइट, again I select it, again I select it. If I say टॉप 10% की जगह अगर मैं टॉप 25% करता हूँ, okay, exactly what it is meaning when I say I'm top 10%, top 25%, top 30%, top 40%. This is of this 1, 2, 3. How many elements we are having? How many we are having actually? 1, 2. See, 10%, 20%. That's how we can form it, right? So मेरे पास 16 है. 16 का 10% कितना होगा? 2. But 67 because it is common, so it is giving 20%. कितना होगा 16 का? So that much you will show. Is it clear or not, guys? So actually you can go for 10%, you can go for 20%, you can go for, now average also you can go. Average also you can go. Now let me check here average. What is the average attendance of the class? Average attendance of the class कितना है? Average attendance of the class अगर मैं देखता हूँ, this is the average attendance of the class. Okay, so average attendance is 5.81 whatever percent. Now I can, without calculating average, I can check how many students are above average attendance, how many students are below average attendance. So आप लो, लेके यहाँ सीधा सीधा above average क्लिक करो, तो आपके पास इतने बच्चे हैं who are having above average attendance. You can check, or you can click it
you can come to this. You can choose how many students are having below average attendance. Clear है guys? Hello. Yes, Yes, sir. sir. ये कर भी रहे हो? Yes, sir. कर रहे Yes, हो? sir. Yes, sir. All right, all right. So that is basically your top bottom rule. मैं एक एक रूल करके जा रहा हूँ, ठीक है? एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है जिसे हम लोग कहते हैं डेटा बस. Now look at the data bus and we'll try to understand what exactly data bus means. This representation during presentation looks very good. That creates bars inside. जो हम जो bars वगैरह बनाते थे, जो sparkline वगैरह बनाते थे, that it creates the bus inside that particular cell. And it takes the highest number as the maximum and accordingly फिर appropriately it create those bars. ठीक है? तो अगर मुझे पूरा का पूरा ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, राइट? आई हैव सिलेक्टेड दिस. आई कम टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आई कम टू द डेटा बस. अब डेटा बस में बहुत सारा फॉर्मेट्स है. सपोज आई चूज दिस फॉर्मेट. आई कैन चूज ग्रेड्स. ग्रेडिंग्स में चूज कर सकता हूं, मैं नंबर्स चूज कर सकता हूं. दिस आई चूज. सी यू अंडरस्टैंड? इसको और थोड़ा सा चौड़ा कर दो तो इट विल लुक मोर गुड. अब 148 it will take 100% and accordingly it keep appropriately reducing things. तो अगर किसी को मैं यहाँ 0 देता हूं then only it will remain blank. जैसे मैं 5 दे दूंगा 148 के हिसाब से ये अपने आप को कर ले. अब 148 के जगह अगर मैं इसको 25 कर देता हूं, सी जो मैक्सिमम है that it will automatically take as 100%. Are you getting my point? Whatever is maximum that will take as highest and accordingly it keep fluctuating things. So it gives you a graphical representation of the things, right? And if you have to look at it, right? जैसे इसको और एक चीज मैं कर सकता हूँ. These are the solid colors I've given to the data bars, but I also can give them the. I come to the data bus. I can give them the shades, different shades जो होता है ना, लाइट ग्रीन से स्ट्रॉन्ग ग्रीन टाइप का शेड्स. और आपको अगर डिटेल में समझना है, यू विल कम टू मैनेज रूल. इन मैनेज रूल यू कम टू द वर्कशीट. Then you click on the edit. That will give you. You see here it is giving you the detailed study of the thing. You see, it is giving you the detailed study of the thing. That is, you see, gradient film, color. Automatically it chooses the maximum and automatically it chooses the minimum. And accordingly, it will adjust this. Now here itself you can change the colors. Gradient fill and solid fill, you can change the colors here, and accordingly it will change its color here. Hello? Hello? Who is this? कौन हल्ला कर रहा है? All right, shall I continue? एक मिनट. किसी को कहीं पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन आने की. हेलो हेलो, इट्स ओके ना? Same you Yes, have sir. same you have color scales. अब color scale. Yes, sir. Now see, let us understand this. Color scale may be a bit different. Then color scale को आपको समझना पड़ेगा. Color scale many a time you use as the codes. Color scale को बहुत जगह पे as codes use किया जाता है. Now this is the color scale, right? Let us understand this color scale. Let us understand this color scale. बार ठीक है. ये कौन है हल्ला कर रहा है? Now suppose these are the numbers. Just look at these numbers. Right, these are the numbers that we have.
Everybody can see the numbers? Okay. अब देखो इस नंबर्स को मैं सिलेक्ट करता हूं. I go to conditional formatting. Now here I come to the color scales. Color scales, if I am not 100% sure, I should not use it. I choose it. देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया है इसको. अब किसको कैसा कलर इसने दिया है, that we'll have to understand very clearly, so that we can explain it also. This is almost like a, you can say, the heat curve या heat diagrams जो हम लोग बनाते हैं ना. इवन कोविड-19 में भी दिखा रहा है कहाँ मैक्सिमम हीट है, कहाँ मिनिमम हीट है. सी, अब द कलर्स इट इज चोजन. अब यहाँ 50 है, अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, 26 को इफ आई मेक इट 100, right now I click it somewhere. See, the color has changes to dark green. ये अगर मैं 5 कर देता हूँ, it has changed to red. Are you getting my point? तो this is specific, this is not random. तो मुझे कैसे समझ में आएगा कलर स्केल का मतलब क्या है? And I can change it according to my need also. So now let us understand exactly what color scale says. This explanation is there in the PPT also. And I repeat, if you are not damn sure about the color scale, you should not use it. Now again, let me come to the color scale. Manage, right? The worksheet. ये स्पेसिफिक कुछ डेटास को जब आप प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तभी आप इसको दिखाते हो, राइट? नहीं तो आप नहीं दिखाते हो, बिकॉज इट हैज गॉट ए वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. जस्ट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ गाइस, अगर ये आपको दिख रहा है ढंग से, राइट, सी व्हाट इट इज से, आपका जो मिनिमम वैल्यू है उसका ये कलर आपने दिया है, आपका जो हाईएस्ट वैल्यू है इसका कलर आपने दिया है, और जो 50 परसेंटाइल जो मीडियन पे आपका है उसको आपने ये कलर दिया है. एंड अकॉर्डिंगली शेड्स विल चेंज. तो इफ इट इज डार्क ग्रीन, दैट मींस इट इज द हाईएस्ट मार्क दैट यू आर हैविंग. मैं इसको ये मान के, हाईएस्ट मार्क यू आर हैविंग if it is dark green. If it is dark red, you are having this. And if it is in between certain yellowish color maybe, then it is the midpoint of you. Now you click OK, you click OK. ठीक है? Now green, dark green is the highest, dark red is the lowest, pure yellow is the mid, dark yellow is the mid. देखो अब अकॉर्डिंगली यहाँ चेंज हो जाएगा. इसको अगर मैं यहाँ 250 करता हूँ, इट विल बिकम डार्क ग्रीन. यहाँ कोई मिड वैल्यू अभी है नहीं आपके पास, फिर भी मिड वैल्यू में भी 80. So that's how it explains things, and you can change it also. You can go to the manage rule. See how you can change it. You can give it a specific numbers also if you wish. आप वैल्यू दे सकते हो, लोएस्ट वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो, राइट. कलर स्केल से जगह आप डेटा बस में चेंज हो सकते हो, 2 कलर 3 कलर स्कीम्स पे जा सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. Those things we'll see in the next time. So otherwise what you can actually in the free time, you practice it, right? Next comes your icons. This is also a very great practice of using icons, right? First I'll just cover up what Excel has given to us. After that we'll see what we are supposed to do when Excel has not given something to us. Okay, so again I cut it, I bring it in front. Now see, you have seen those Sensex and etc. In this kind of data, this is very important. Something is going up, something is going down using different kind of arrows. So these arrows can be used here also. That is with the help of icon sets. With the help of icon sets, we can use these arrows, and then this looks wonderful. So suppose I choose this again. I go to the conditional formatting. Icon sets, you choose any icon. There are numerous icons. Let me choose this. ठीक है, तो आपको सेम कॉन्सेप्ट है. अब ये जो कुछ एरोज, सी दिस एरोज आर गोइंग अप,
these arrows are going up, these arrows are going down, these arrows also going down, these arrows are going horizontal. What exactly it means, right? So again, let me study what it says, because if you don't understand this, you should not use it. It's all about percentile. 67, if your number is above 67 percentiles, arrow will go up. If your number is below 33 percentile, the arrow will go down. And if it is between 67 and 33, arrow will be horizontal. Right? परसेंटेज. तो आप परसेंट को यहाँ आप परसेंटाइल में भी चेंज कर सकते हो, 67 को आप चाहे किसी में भी चेंज कर सकते हो. इट्स, मैं मान के चलो, मैं कहता हूँ 80 कर देता हूँ. एनीथिंग अबव 80 अप करो, एनीथिंग बिलो 20 डाउन करो. सो इट विल शो अकॉर्डिंगली योर नंबर्स विल चेंज. यहाँ आपके एरोस चेंज हो जाएंगे. एनीथिंग अबव सर 80 विल गो अप. राइट? तो ये आपका चॉइस है, आप किस किस एरोस को आप दिखाना चाहते हो, किस एरोस को आप डाउन दिखाना चाहते हो. जैसे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, तो मैं कह रहा हूँ एनीथिंग दैट इज अबव 95 will go up, right? And anything below 30 will go down. So I can manipulate with this. ये absolute necessity नहीं है 30, right? अब परसेंट ना देके मैं numbers choose कर सकता हूँ, exact numbers, right? Okay. Now everything will change accordingly. You see? Okay? तो ये आपका चॉइस है, राइट? यहाँ सब 0 0 वैल्यू आ गया ना, तो यहाँ मैं देता हूँ, यहाँ देता हूँ 95, और यहाँ पे मैं देता हूँ 30, राइट? अब now it's value. Okay? Okay. See? It has changed. So you can keep manipulate. सर The first thing is that आप पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. सर हाँ जी, आप पूछो. सर 39 और 43 क्या दिखा रहा है एवरेज? किस पे ये जो मैंने लाया था, ये मैनेज रूल पे. ये सर नहीं, 14 और 6 के बाद जो है वो 39 और 43 ये एवरेज बता रहा है सर. इसकी बात कर रहे हो आप? ये सर हमने देखो, आपका चॉइस है. आप इसको नंबर ले सकते हो, आप इसको परसेंट ले सकते हो, आप कोई फॉर्मूला चाहे उसको यूज कर सकते हो, या आप परसेंटाइल ले सकते हो. तो मैं अगर नंबर ले रहा हूँ तो ये एब्सोल्यूट हो रहा है. नंबर ले रहा हूँ, मैं अगर बता रहा हूँ 90, तो कोई भी 90 से ऊपर होगा तो उसका वो एरो आप दिखाएगा. आप समझ रहे हो बात का? ओके सर. तो हाउ यू मैनिपुलेट, सर गिवन ये आप गिवन कुछ नहीं है. सर ये आप, हाँ, अप एरो और डाउन एरो तो समझ में आ रहा है. ये जो सर 39 43 ये जो सीधा दैट जा इज रहा है वो काइंड. एवरेज है. नहीं, एवरेज नहीं है. ओके, फाइन, एवरेज नहीं है. मैं आ रहा हूँ उसमें. ये एरो क्या शो कर रहा है सर? हाँ, एग्जैक्टली. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद दैट. ओके, रीड पे. एनीथिंग above 95 will go up, anything below 30. एक मिनट, anything below 30 will go down. ओके सर. So between 30 and 95 जो होगा ना, जी. तब ये साइड एरो दिखाएगा. बात समझ में आ गया? ओके. Below 20 it is going down, above 95 it is going up. If the number is between 95 and 20, then it's the side arrow. That means it is okay, it is between range. Got my point? ओके सर. All right guys, हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है. Okay, so these are the basic things, we can say the basic part of the conditional formatting, which is given. We can practice it and we can master the skill, and whenever needed we can use it. Now the problem that comes is, जब मुझे जो चाहिए होता है वो एक्सेप्ट के पास नहीं. Right? Now guys, just listen to it very carefully what I'm saying. मैं क्या कह रहा हूं कि
I want to up this part is actually the important part of the conditional formatting. बाकी आगे कुछ लिखा हुआ नहीं था. It was given. हमें सिर्फ देखना था, right? But this is the part that we are supposed to learn. This will create the product. Okay. So what I'm saying here is, suppose I create a drop down list here of this. यहाँ क्या दिया हुआ है? आपका टॉप प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है? आपका क्वांटिटी दिया हुआ है, आपका प्राइस दिया हुआ है. Are you getting me or not? Now, guys, Yes, sir. what I want is, Yes, sir. first I want to create a drop down list of this. So let me create the drop down list here. Okay, I'll go to data validation, quite obviously, list. I will choose this. Okay, and I'll create. Okay, तो यहाँ ये ड्रॉप डाउन आ गया ना. अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी चूज करूँ. जैसे I have chosen watches here. यहाँ पे watches highlight like this. अगर watches के जगह मैं perfume चूज करूँ, तो instead of watches, you know, instead of watches, आपका perfume highlight हो जाए. So I want to make the conditional formatting dynamic. Okay, so do nothing, just see what I am doing. बाकी फिर आपको मैं करने दूंगा. ठीक है. तो फर्स्ट वन लेट मी डू इज, देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिक रूल है, जिसे मुझे फॉर्मेट करना है उस पूरा का पूरा सबसे पहले सिलेक्ट करना है. आई हैव सिलेक्टेड दिस, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गिवन एनीवेयर. ठीक है. अभी तक मैंने जहां पे देखा है, इट इज नॉट इन द हाईलाइट सेल रूल्स, इट इज नॉट इन द टॉप बटन डेटा बस. So I'll go to new rule for the first time, right? So where I'm going, first I've selected the whole data. I'll come to the conditional formatting and I'll choose the new rule. In the new rule, I will go to, you see, there are so many options given, but at the bottom, use formula. Okay. Now, somebody's microphone is on, I suppose. Sir, your voice is सर not आपकी audible. आवाज नहीं आ रही सर.
हेलो हेलो। सर। सो सॉरी, एक्चुअली मैंने सर उसको आवाज नहीं आ रही है। अभी आएगी, अभी आ रही है। हाँ सर आ गई। आ गई, हाँ। चलो, मैं आई रिपीट द होल स्टफ अगेन। वो मैंने गलती से माइक को ऑफ कर दिया। ऑलराइट गाइस, बेसिकली द पॉइंट इज आई ब्रिंग इन द डेटा हियर, लिसन टू इट वेरी, इसको जरा ध्यान से देखना आप लोग। में आई रिपीट इट अगेन, राइट? एंड दिस थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू कैन मास्टर दिस ना, यू विल क्रिएट वंडर्स। ऑलराइट, नाउ I select the whole data here. I come to conditional formatting. I come to the new rule. Here I come to the use formula. अब use formula में हम वही formula use करते हैं जो if के अंदर हम करते थे, without writing the if. So I take equal to, one is this, equal to, I can say this. ठीक है, ये लेकिन मोबाइल पे भी जाना चाहिए, कैमरे पे भी जाना चाहिए. दैट मीन्स दिस वैल्यू कैन नॉट बी एब्सोल्यूट. This value I have to check with all the data, so this value cannot be absolute. So I remove the dollar signs in this. Then I come to format. I come to fill. I choose yellow. Okay. Okay. अब तो चल गया. यहाँ watch है तो यहाँ yellow है. Now let me see if I bring it to mobile. You guys can see the magic. आप लोगों को magic दिख रहा है कि नहीं? Guys, shoes. You see, shoe is highlighted. सर Camera is highlighted. Laptop. जादू Ji, you want me to repeat it again? Let me repeat it again. Sir, once more. Yeah, let me repeat it again. So I come to here, clear rule, all. चला गया गायब. Drop down list, everybody knows how to make, no issues. Right? Yes, sir. Everybody knows how to create the drop down. So basically this thing I am supposed to format. So I select all the data. देखो आपको करना क्या है, यहाँ जो है इसके साथ मैचिंग करनी है. अगर इसके साथ मैचिंग नहीं मिले तो इसके साथ मैचिंग करनी है. जहां मैचिंग मिल जाए उसको फॉर्मेट करना है. दैट इज द पर्पस. So I select this and I go to conditional formatting. I choose the new rule, and in the new rule, out of all these options, I choose use formula. फॉर्मूला में क्या यूज कर रहा हूं? ए सिंपल फॉर्मूला. मैं ऑपोजिट टेंस से भी कर सकता हूं. आई कैन से दिस इक्वल टू दिस. इसमें से मुझे देखना है कि फिक्स किसको रखना है, फिक्स किसको नहीं रखना है. ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर सेल टू बी फिक्स्ड एंड द अदर सेल should not be fixed, right? Then I click on format. I speak on PLO. Okay. Okay. See, it's working, guys. It's wonderful. तो इसको तो आप लोग एक बार करो, लेकिन आपके सामने मेरे पास बड़ा चैलेंज है जो आपको है. चैलेंज इज कम डाउन. नाउ हियर I am not satisfied with this. What I want from you, if I have chosen watch, it should look like this. Are you getting my point? If I choose laptop, the whole row should be highlighted. Quantity and price also Whole whole highlighted, no? whole row should be highlighted because this doesn't look good. This is not serving my purpose. भाई मैं वॉचेस कर रहा हूं तो वॉच का पूरा रो हाईलाइट होना चाहिए ना. लैपटॉप करता हूं तो लैपटॉप का पूरा रो हाईलाइट होना चाहिए, तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे कुछ मजा भी आए मुझे. सो दिस इज द वॉचेस कमिंग. दिस इज व्हाट आई डिड. लेट मी कम टू द मैनेज रूल्स and let me come to the worksheet, and this is what I did. This is the equation what I wrote, right? It's a simple short equation. All right, now guys, I want you to spend some time and highlight
हाई देखो स्पेलिंग क्या लिखा है, हाईलाइट द एंटायर रिकॉर्ड, होगा कि नहीं होगा? हेलो, होगा सर, होगा। जस्ट होगा सर। जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई, हाँ सर, हो जाएगा। करिए करिए। गोल्डन रूल ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने आप लोगों को बताया था बेटे, जहां फॉर्मेटिंग करना है वो पूरा सिलेक्ट करना जरूरी है। तो हियर व्हेन आई सेड द एंटायर रो to be highlighted, that means I'll have to select the whole data. That is the first thing. After that, whatever I do. Okay. So let me bring in it here, the drop down list. Okay. So drop down list has come here. I have selected the whole data. All right. I come to the home. I come to the new rule. अब मुझे सेम करना है, मुझे जो प्रीवियस में किया था उससे अलग कुछ मुझे नहीं करना है, right? So basically what I'm saying is here equal to this equal to this, but in this case I said everything should remain in a row, and that means it should change from one row to another row, another row to another row. The column should remain fixed, so I remove it क्योंकि rows इसमें change हो रहा है, मुझे पूरा का पूरा एंटायर रो चेंज करना है तो रो विल कीप चेंजिंग, राइट? सो रो का मैं यहां से डॉलर साइन हटा रहा हूं, आई गो टू द फॉर्मेट, आई डू द फिल, ओके, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं आया। लेट मी ब्रिंग इन कैमरा, you see the whole row is selected, you bring in perfume, all perfume selected, you bring in cosmetics, whole of the cosmetics is selected, right? So exactly what I have done, I do a control Z, right? See, now this is basically what I'm talking about is drop down list is created. Now I am come to the conditional formatting again. ये है कि नहीं सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, इसलिए मैनेज रूल देखना बहुत जरूरी है। तो वर्कशीट, हाँ, it is there, so let me delete it. Okay, now see, first thing, important thing, I'll have to select the whole range where I'm supposed to conditionally format. Then I come to the conditional format, I click on the new rule. अब न्यू रूल पे सिंपल है, इक्वल टू साइन में लगाऊंगा, इक्वल टू दिस should be equal to this. Then what I want, I do not want this particular cell to be highlighted, I want entire row to be highlighted and rows should be kept changing, that means multiple. So I remove the row, should not be absolute here, row should be able to change in this case, columns should remain fixed but row should able to change, so I click okay. ओहो, मैंने फॉर्मेट ही नहीं किया, कोई बात नहीं, लेट मी डू इट, सर फॉर्मेट, कलर। हाँ कलर नहीं दिया तो दोबारा देता हूँ, ओके ओके, ठीक है। अब मैं यहां से जब चूज करूंगा, ठीक है, आपके लिए जो टास्क है, आपके लिए टास्क ये है कि यहाँ मैं प्रोडक्ट डालूंगा या मैं कंट्री डालूंगा, प्रोडक्ट डालूंगा तो पूरा का पूरा रो सिलेक्ट होना चाहिए, कंट्री डालूंगा तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाना चाहिए, राइट? अगर नहीं होगा तो आई विल सेंड द सॉल्यूशन दैट आई डिड अ क्रॉस रोड, ओके। नाउ आई कम टू दिस वन, तो इस डेटा को भी हम देख लेते हैं।
उसके बाद हम और किसी में भी जाएंगे, कंट्रोल एक्स, I come to this one. So condition is very simple, right? Here they are asking for the A which is more than 100 to be highlighted. Any A that is more than 100. Score. It should be A and it should be more than 100. Multiple conditions. It should be A and it should be more than 100. Then you choose the entire. You can choose the code. तो यहाँ A होना चाहिए और यहाँ 100 से ऊपर होना चाहिए. If both, then highlight whatever you have selected. Guys, okay, before coming to that, let me do it. जैसे यहाँ और एक ऑप्शन आपके पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है. You can come to highlight rule में और एक चीज है duplicate values. If you click here, it highlights automatically all the duplicate values. So you can easily identify all the duplicate values. In the highlight, you have duplicate values. So it chooses the duplicate values. That's a important aspect actually. Now in this, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ. Again, let me select this. If I select this, I need to be highlight this. I come to the conditional formatting. New rule. Let me see it works or not. Edit. Multiple conditions to be satisfied. So I will type with and right this what and here and this to be greater than 100, right? See, now if I make it 112, it's all highlight. Challenge is to make the whole row. Now if I make it A, it will also be highlighted, but if I make it 99, it highlight will go. So multiple criteria it is following. Got my point? Hello. Hello. Yes, sir. आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. अब भी मुझे ये बताओ, इसी में अगर पूरा का पूरा रो मुझे सिलेक्ट करना है तो कैसे करें? हाँ. क्या? Let me see. Let me. Okay. Let me delete it. If I choose everything, conditional formatting, I come to the new rule. So this is also you'll have to solve how to do it through. Again, I'm coming back with another problem as we have solved guys in 27.
Right. In 27, what am I supposed to do? वो मैंने mute किया क्या? Highlight cell. I think I did not save it. That attendance that we did, attendance, I am sending that particular exercise. Attendance that I did, basically what I want from you guys, that attendance, the whole sheet should be highlighted. So spend some time. I'm not actually stressing you out in this case. We'll revisit this thing in the next time again a very important function. But I leave you with some exercise that you will have to do, right? The comparing tool, you will find it in the PPT. The final assignment that you will have to do in this case. See, this is the conditional formatting. These are certain examples that I have based on certain criteria. So you see a checkbox, and this is the data are given. इस data में exactly इसी type का conditional formatting आपको करना है. So you have to study this conditional formattings, study these conditions. कैसे इसका study करोगे? You'll have to study the criteria. जैसे different bars का क्या criteria रखा मैंने, shades के color scales के क्या criteria रखा मैंने. You'll have to study this from this manage rule, and you follow this exactly same formatting in the next ones. Okay, so that actually concludes the term here. I am not stressing it further. Anyone having any question, any doubt, anything? Hello? Not yet, sir. Not yet, na? Chalo, go through it. No, sir. We'll have a doubt